Hello students, so good morning. In previous video lecture we completed the important part of the topic, that is properties of definite integration with their proofs. हर property का proof मैंने दिया है. There are total 8 properties in the syllabus that are the properties of definite integration. So today just recall the property, then we will take the examples. Okay, so what is the first property? Property number first, integration from a to a f of x dx is equal to 0. This property says that if upper and lower limit are same, then the definite integration is what? 0. So a to a f of x dx is equal to 0. Second property, integration from a to b f of x dx is equal to integration from b to a f of x dx, that is minus. So this is second property. If upper and lower limit are interchanged, changes only in sign. Here is a to b, this is b to a, plus this becomes what? Minus. Property number third, integration from a to b f of x dx is equal to integration from a to b f of t dt. Here variable is x, here variable is t. Both are same. This is with respect to x, this is with respect to t. Function same, f of x, f of t. Just like sin x, sin t, sin theta, cos x, cos t, cos theta. But limits must be same. Both are equal. It means what? Definite integration is independent to the variable. Okay. Number 4 property, integration from a to b dx is equal to integration from a to c f of x dx plus integration from c to b f of x dx. प्रॉपर्टी नंबर 4, ए टू बी है, सिर्फ मैंने सी ऐड किया है, दैट सी मस्ट बी लेस देन अपर लिमिट एंड ग्रेटर देन लोअर लिमिट. सो हियर द इम्पोर्टेंट, दिस सी मस्ट बी लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए. Now important the fifth property, which is very important for the examples. Lower limit 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. ऐसा हम कर सकते हैं. a माइनस x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x. सो ये प्रूव क्यों हुआ? ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5. अब प्रॉपर्टी नंबर 6, a to b f of x dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx. a plus b minus x dx. Property number 7, 0 to 2a f of x dx is equal to 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx. So this property is important for the examination, board examination. Prove that or show that. This is the 7th property. Number 8th property, integration from minus a to plus a, negative to positive, same number, f of x dx is equal to twice 0 to upper limit 0 to a f of x dx और is equal to 0. इसका दोनों भी आंसर आते हैं, ए बी और ए बी. बट केसेस इज व्हाट? इफ फंक्शन इज इवन, f of x is even function. if f of x is what? odd function. odd even के लिए केसेस है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. 7th or 8th exam property number 7 and 8 sure almost every examination for 3 to 4 marks for board examination. Okay, this was the last video lecture. So now we will take examples on this property and also what the remaining examples of proper exercise 4.2. okay,
Okay, now let us see the exercise 4.2. In that second example evaluate. ये second example start हुआ है, first में 15 example हमने already लिया है, example number second है ये. Now इसमें 5 examples. Let us start from the first example. I is equal to 0 to 1 by root 2 sin inverse x divided by 1 minus x square raised to 3 by 2 dx. So it is very clear कि हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना है, बिकॉज साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 by root 2 ये साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. एक्स रेज टू 3 by 2 का मीनिंग होता है x into x raised to half, that is equal to x root x. Any term raised to 3 by 2, actually that is what x into x raised to half. X raised to 1 plus x raised to half, 1 plus half, 1 plus 1 by 2 is 3 by 2, that we can write x into root x. So same here, 1 minus x square raised to 3 by 2 is equal to 1 minus x square into root 1 minus x square. Now it is very clear, we have to substitute here sin inverse x is equal to t. The derivative of sin inverse x is 1 upon under root 1 minus x square dx is equal to dt. So instead of this we can write dt. Substitution apply किया means हमें यहाँ पर variable change करना पड़ेगा. x varies from 0 to 1 by root 2. When x is equal to 0, sin inverse 0 is 0. Sin inverse 1 by 2 is pi by 4. So therefore t is equal to 0, t is equal to pi by 4. When we apply substitution method, then definitely the variable changes. First variable was x, now it becomes what, t. So this lower limit and upper limit for x variable, not for t. That's why जो भी पार्ट हमने पुट किया था वहां पर x बार x 0 रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे 1 by root 2. So t becomes 0 to pi by 4. So I becomes 0 to pi by 4. Sin inverse x is t. 1 upon under root 1 minus x square is dt. This is t. साइन इनवर्स x अगर t है तो x की वैल्यू कितनी है, साइन t है. साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, सो x इज इक्वल टू साइन t. t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर dt. ये t है, ये dt है. इट्स अ t, इट्स अ dt. 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, टी स्क्वायर नहीं साइन स्क्वायर, 1 minus sin square t, because x is what, sin t, sin square t. So let us see the solution. I is equal to integration from 0 to pi by 4. Numerator is t, 1 minus sin square t is cos square t dt. 1 by cos square t is sec square t, t into sec square t dt. Now here we have to apply the by parts method, because t is algebraic function and sec square t is what, trigonometric function. It's u into v by parts. Order is absolutely correct. So first integration of second dt from 0 to pi by 4. यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं लिखना है, कल मैंने ये भी बताया आपको. माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 4 derivative of d by dt of t into integration of sec square t dt. So it is all about with respect to t. अब with respect to x नहीं आएगा. That's what derivative is d by dt of t. Integration means dt, sec square t dt. So sec square t is integrable, that is tan t from 0 to pi by 4. Derivative of t is 1, sec square t is tan t. Integration of sec square t is tan t, 0 to pi by 4.
pi by 4 tan pi by 4, pi by 4 tan pi by 4 minus 0 into tan 0. ये completed first bracket. So put first upper limit minus then lower limit. जहाँ पर वेरिएबल है वहाँ पर t है, वहाँ पर पहले pi by 4 रखो, उसके बाद 0 रखो, middle sign is what? Minus sign. Integration 1 into tan t is tan t. Integration of tan t is what? Log of sec t. 0 to pi by 4. Pi by 4. Tan pi by 4 is 1 minus 0 minus upper limit sec 0 sec pi by 4. Sec pi by 4 कितना होता है? √2 होता है. माइनस sec 0 sec 0 1 होता है. cos 0 is 1, that's why sec 0 is also 1. So sec 0 is 1, so log √2 minus log 1. So this is pi by 4 minus log √2, 2 raised to half करेंगे यहाँ पर, माइनस इंटू माइनस प्लस log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0. So be carefully solve this solution. This is equal to pi by 4 minus 1 by 2 log 2. पाई बाय 4 माइनस log 2 लिखा तो भी चलेगा. पाई बाय 4 माइनस log 2 log √2, पाई बाय 4 माइनस log √2, ये भी करेक्ट आंसर है. बट √2 मीन्स 2 raised to half और पावर में का 1 by 2 नीचे आएगा. देन यू कैन टेकिंग 1 by 2 कॉमन इन ब्रैकेट पाई बाय 2 माइनस log 2, ये उसका आंसर. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल. ओके, ओके, नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर सेकंड. लास्ट फर्स्ट हुआ, अभी सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 4. एग्जाम्पल नंबर सेकंड, I is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 4 sec square x dx is numerator, denominator 3 tan square x plus 4 tan x plus 1. Now it is very clear that we have to substitute tan x is equal to t. The derivative of tan x sec square x dx is equal to dt. So therefore after substitution the most important we have to change the limits. हमें लिमिट्स चेंज करना है बिकॉज दैट लिमिट्स आर फॉर एक्स वेरिएबल. दिस इज इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स एक्स इज द वेरिएबल. एक्स वैरीज फ्रॉम 0 to pi by 4. So now we substitute means the change in the variable t. So t varies from what? So जो हमने x is equal to 0, x is equal to pi by 4 यहाँ पर पुट करना है, means we have to write here when x is equal to 0, x is equal to 0, therefore t is equal to tan 0 and tan 0 is equal to what? 0. X is equal to pi by 4 means t is equal to tan pi by 4 and tan pi by 4 that is how much is 1. So now therefore I integral becomes integral from 0 to 1 sec square x dx is dt divided by 3t square plus 4t plus 1. Now it is very clear that is 1 upon quadratic equation. अभी ये 1 upon quadratic equation है. So now follow the first step. Make the coefficient of t square as unity. It is 0 to 1. 3 से सबको डिवाइड करो. t square plus 4 by 3t plus 1 by 3. This is after completion of first step. Now for getting perfect square we have to add and subtract b square upon 4a square. So I is equal to a 1 by 3 integral from 0 to 1 upon t square plus 4 by 3 t plus b square 16 for a square 9. So 4 by 9 plus 4 by 9 minus 4 by 9 plus 1 by 3. This is a dt. A 1 by 3 we have to add and subtract b square upon 4a square in between the term of t and variable.
टर्म ऑफ टी एंड कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल की टर्म और कांस्टेंट टर्म के बीच में पहले ऐड करना है, उसके बाद क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है. सो दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dt डिवाइडेड बाय द कंप्लीट स्क्वायर इज t plus 2/3 whole square. t plus 2/3 whole square. Now LCM is 9. So इधर -4 plus 3 इधर 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 बन जाएगा. सो इट इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dt डिवाइडेड बाय t plus 2/3 whole square. 4 minus 3 minus 4 is -1. -1/9 means 1/3 square. 1/3 square. So that becomes minus 1/3 square. That formula is 1/x square plus 1/x square minus a square. Standard integral का formula number second. 1/x square minus a square is 1/2a log of x minus a upon x plus a. This is equal to 1/3. 1/2a. A is 1/3 log of t plus 2/3 minus 1/3 t plus 2/3 plus 1/3. Make a box bracket, write here 0 to 1. To the right side there must be a bracket, box bracket, bottom lower limit, top upper limit. 1/2a log of x minus a upon x plus a. This is x and this is a. So these 3 and these 3 cancel. 1/2 log of 3t plus 2 minus 1, 3t plus 2 plus 1, 0 to 1. ये 1/2 log of 3t plus 1, 3t plus 3 from 0 to 1. 3t plus 3, 3t plus 1. So finally now integration तो हो गया, अब हमें लिमिट पुट करना है. So now limit, how to put the limit? This is the important part of definite integration. It is 1/2. First put upper limit with function, log is the function here. Upper limit, t की जगह पे upper limit 3 plus 1 4, 3 plus 3 9, 4/9. ये होगा अपर लिमिट. नाउ माइनस विथ फंक्शन, लॉग इज द फंक्शन. अब 0 रखना है, 0 plus 1 0 plus 3, इट इज 1/3. क्लोज द ब्रैकेट. 1/2 log of 4/9 upon 1/3 means 3/1. log m minus log n, log m minus log n is log m by n. 4/9 upon 1/3, 4/9 upon 1/3 means what? Into 3/1. So directly लिखा, it is part of calculation, is very easy. 3 3s are 9 cancel. What is answer? 1/2 log of 4/3. This is a definite integral. 1/2 log of 4/3. So this is a answer of example number second. Okay, it is very simple. Now next, I is equal to integration from 0 to 4 pi sin 2x divided by sin raised to 4x plus cos raised to 4x. ऐसे एग्जाम्पल दिया है, 0 to 4 पाई दिया, लेकिन हम यहाँ पर करेक्शन करेंगे, यहाँ पर π/4 करेंगे. सो इट इज अ प्रिंट मिस्टेक in the example number 3rd. Integration from 0 to π/4 sin 2x divided by sin raised to 4 plus cos raised to 4. ये करेक्शन मैंने कैसे किया, 4 पाई नहीं हो सकता, बिकॉज अगर हमने यहाँ पर sin x इज इक्वल टू टी पुट किया, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू टी पुट किया, तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव बन जाएगा sin 2x 2 sin x into cos x, दैट इज sin 2x. बट जब हम लिमिट चेंज करेंगे, sin 0 0 बन जाएगा, और sin 4 पाई also 0,
So lower limit 0, upper limit 0, that integration becomes total part is what? 0. So यहाँ पर मैंने करेक्शन किया, 4 पाई नहीं होगा वहाँ पर, पाई बाय 4 होगा. So this is equal to 0 to pi by 4, 2 sin x into cos x divided by sin raised to 4x plus cos raised to 4x. दो तरीके से सॉल्व होता है एग्जाम्पल. या इसको साइन स्क्वायर होल स्क्वायर करो, इसको कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर करो, उसी से भी सॉल्व होता है. बट यहाँ पर डिवाइड ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय कॉस रेज टू 4x ऑन बोथ साइड. सब्सटीट्यूशन इससे उससे सिंपल ये कंसेप्ट है. यहाँ पर कॉस रेज टू 4 से डिवाइड करेंगे. 2 sin x into cos x numerator divided by cos raised to 4x whole divided by sin raised to 4x upon cos raised to 4x is tan raised to 4x plus cos raised to 4x upon cos raised to 4x is 1 dx. This becomes cos x and cos x cancel, cos cube x is there. Integration 0 to pi by 4, 2 sin x upon cos x, sin x upon cos x tan x, और एक cos square x बच गया. cos क्यूब है ना, उसमें से एक cos गया, cos square बन गया. 1 by cos square x sec square x divided by tan raised to 4x को मैं ऐसा करता हूँ tan square x whole square plus 1 dx. यहाँ पर एक cos x कैंसिल हुआ, cos क्यूब x बन रहेगा, रिमेनिंग पार्ट रहेगा cos क्यूब x, उसमें से एक cos x और एक cos square x, sin x by cos x tan x, 1 by cos square x sec square x. नाउ ये जो डेरिवेटिव है tan square x का डेरिवेटिव है, पुट करेंगे tan square x इज इक्वल टू t. tan square x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 tan x into sec square x. देखो 2 tan x into sec square x है. So now directly now we put here, substitute here, tan square x is equal to t, 2 tan x into sec square dx is equal to dt. I is equal to, substitution किया तो लिमिट चेंज करना नहीं भूलना चाहिए. when x is equal to 0, x is equal to pi by 4. x varies from 0 to pi by 4. So tan 0 0, tan pi by 4 1, 1 square is 1. So now limits become 0 to 1. So I is equal to integral 0 to 1 dt divided by t square plus 1. 2 tan x sec square x dx is dt. 2 tan x sec square x dx is dt. T square plus 1. 1 upon t square plus 1 is tan inverse t. From 0 to 1, tan inverse 1 upper limit minus tan inverse 0. Tan inverse 1 is 1, tan inverse 0 is 0. It is what? 1. So integral is 1. But when we make a correction in the example where that x varies from 0 to not 4 pi, it is pi by 4. pi by 4 करने के बाद ये आंसर आ जाएगा. So that is integral is equal to what? 1. So we'll take number 4th. Number 4, I is equal to integration from 0 to 2 pi root cos x into sin cube x dx. This is example number 4. अब example 4 क्या है? root cos x into sin cube x dx. So अभी 0 to 2 pi है, cos x तो t पुट करना है, बट यहाँ पर sin cube x है, उसमें से एक साइड स्प्लिट करो, रिमेनिंग sin square x को 1 minus cos square x करो. प्रोसेस इज वेरी सिंपल. 0 to 2 pi, ये रूट cos x, ये sin square x और ये sin x dx. उसमें से एक sin x स्प्लिट किया,
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 pi अंडर रूट cos x. साइन स्क्वायर x मीन्स 1 minus cos square x. ये साइन x dx एज इट इज. अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करना है बिकॉज एक साइन एक्स डी एक्स तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव है. सो पुट करो cos x इज इक्वल टू टी. डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. सो वी कैन राइट साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी. साइन एक्स डी एक्स कितना होगा? माइनस डी टी. ये होगा स्टेप ऑफ सब्सटीट्यूशन. बट अब अभी यहाँ पर हमको वेरिएबल चेंज हुआ है तो सब्सटीट्यूट लिमिट्स भी चेंज करना पड़ेगा. x वैरीज फ्रॉम 0 to 2 pi. x 0 रखो, cos 0 1, cos 2 pi also 1. cos 90 0 होता है, cos 180 minus 1, cos 360 1. So cos of 2 pi is 1, cos 0 is 1, cos 2 pi is also 1. So both limits become same. I is equal to integration from 1 to 1 root t 1 minus t square minus dt. जहां पर cos x है वहां पर t पुट किया मैंने. ये देखो cos x t 1 minus t square and sin x dx is what? Minus dt. But property 1 says that if upper limit and lower limit are same, the integration is directly what? 0. So ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली क्या लिखो आंसर? 0. Because of what? Upper and lower limit are 0. Best way you mention the proper number first. A to A f of x dx is equal to how much? 0. So that answer is what? 0. This is the solution of example number 4. Now we'll start the example number 5. Example number 5 now. Integration from 0 to pi by 2 1 upon 5 plus 4 cos x dx. 1 upon 5 plus 4 cos x. अब ये एग्जाम्पल आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप्स का है. सब्सटीट्यूशन है, बाय पार्ट्स है या बाय पार्शियल फ्रैक्शन है. अगर सब्सटीट्यूशन है तो सब्सटीट्यूशन का कौन सा टाइप है? ये वो टाइप है 1 upon a plus b cos x. If 1 upon a plus b cos x or 1 upon a plus b sin x or 1 upon a plus b cos x plus c sin x, that time we put tan x by 2 is equal to t. dx is equal to 2 dt upon 1 plus t square. And cos x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. Sin x is equal to 2t upon 1 plus t square. So यहाँ पर हमें पुट करना है tan x by 2 is equal to t. Directly mention dx 2 dt upon 1 plus t square and cos x 1 minus t square upon 1 plus t square. So the most important we have to identify the type of the method. First is method of integration, then type of the methods. So this is what 1 upon a plus b cos x. These steps are the substitution. Now here we have to change the limits. When x is equal to 0, x is equal to pi by 2. अभी जो सब्स्टिट्यूट किया है वहां पर x की जगह पर पाई बाई 2 लिखना है और 0 लिखना है. पहले 0 लिखो. tan 0 by 2 is tan 0. tan pi by 2 by 2 is pi by 4. Pi by 2 by 2 is pi by 4. Tan 0 is 0. Tan pi by 4 is what? 1. So I now 0 to 1. dx 2 dt 1 plus t square. आई थिंक ये सेम एग्जाम्पल हुआ है. ओनली चेंजेस व्हाट? वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, इतना ही फर्क है. ये 5 प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. cos x instead of cos x write this term 1 minus t square upon 1 plus t square. dx is 2 dt upon 1 plus t square. I is equal to
इंटीग्रेशन 0 to 1 2 dt upon 1 plus t square divided by 5 plus 5t square 5 plus 5t square 4 से मल्टीप्लाई करो 4 minus 4t square divided by 1 plus t square 4 into 1 4 4 into t square 4t square 5 into 1 5 5 into 5 5t square 5 into t square 5t square 1 plus t square 1 plus t square cancel 0 to 1 numerator 2 dt divided by 5t square minus 4t square is t square 5 plus 4 is 9 taking 2 outside 0 to 1 1 upon t square excuse me 3 square dt t square plus 3 square dt. Now apply the formula 1 by tan inverse t by 3 0 to 1. It's a 2 by 3 outside in bracket tan inverse 1 by 3 minus tan inverse 0 0 by 3 is 0. t की जगह पर एक बार 1 लिखो एक बार 0 लिखो tan inverse 1 by 3 tan inverse 0 by 3 विथ फंक्शन लेना है, सिर्फ इतना ही पार्ट नहीं लेना, फंक्शन जो भी लॉग हो tan inverse हो sin inverse हो जो भी है. This equal to I is equal to 2 by 3 into tan inverse 1 by 3. This is the answer. So what is the answer of example number 5? That is 2 by 3 into tan inverse 1 by 3. Tan inverse 0 कितना होता है? 0. So these are the 5 examples of this exercise 4.2. लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन लिया और ये आज के 5 एग्जांपल्स. ओके, सो टुमारो विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट एग्जांपल. सो टुडे आई विल स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच.